ह्यूम सेक्शन 2 के शुरू में कहता है कि ऑब्जेक्ट्स हैव रिलेशंस टू ईच अदर। अगर तो एक आइडिया अपने ऑब्जेक्ट को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट करता है तो जो सारे रिलेशंस, कॉन्ट्रडिक्शंस और एग्रीमेंट्स होल्ड करते हैं बिटवीन दीज टू आइडियाज़, दे होल्ड ऑल्सो फॉर देयर ऑब्जेक्ट्स। ये जो कोरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन दीज आइडियाज़ एंड ऑब्जेक्ट्स, ये फाउंडेशन है ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज। ह्यूम कहता है wherever ideas are adequate representations of objects, the relations, contradictions, and agreements of the ideas are all applicable to the objects, and this we may in general observe to be the foundation of all human knowledge. But our ideas are adequate representations of the most minute parts of extension, and through whatever divisions and subdivisions we may suppose these parts to be arrived at, they can never become inferior to some ideas which we form. The plain consequence is that whatever appears impossible and contradictory upon the comparison of these ideas must be really impossible and contradictory without any further excuse or evasion. यूम यहाँ पे कह रहा है कि हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ होंगे ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ एक्सटेंशन, और ये एडिक्वेट आइडियाज़ हैं। हम इन पे अराइव करते हैं बाय डिवाइडिंग मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, लेकिन दैट डज नॉट मेक देम एनी लेस ऑफ एन आइडिया। हमने पिछली वीडियो में सेक्शन 1 की जब बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट हाउ इफ़ यू इमेजिन a 1,000th part of a grain of sand and if you imagine a 10,000th part of a grain of sand, तो दोनों के जो आइडियाज़ हैं, one is not less than the other. Even though जो ऑब्जेक्ट ये आइडियाज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, they may be in fact less than or more than the other object. Therefore, क्योंकि ये simplest आइडियाज़ हैं जो हमारे दिमाग में हैं, whatever proves to be contradictory or impossible between these simple ideas must also be impossible and contradictory in reality. फिर ह्यूम प्रूफ करता है कि कोई भी फाइनाइट एक्सटेंशन इन्फिनिटली डिविजिबल नहीं हो सकती, और इस बारे में कहता है एवरीथिंग केपेबल ऑफ बीइंग इन्फिनिटली डिवाइडेड कंटेन्स एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स, अदरवाइज द डिविजन वुड बी स्टॉप्ड शॉर्ट बाय द इंडिविजिबल पार्ट्स which we should immediately arrive at. If therefore any finite extension be infinitely divisible, it can be no contradiction to suppose that a finite extension contains an infinite number of parts, and vice versa, if it be a contradiction to suppose that a finite extension contains an infinite number of parts. No finite extension can be infinitely divisible. But that this latter supposition is absurd, I easily convince myself by the consideration of my clear ideas. I first take the least idea I can form of a part of extension, and being certain that there is nothing more minute than this idea, I conclude that whatever I discover by its means must be a real quality of extension. I then repeat this idea once, twice, thrice, and so on, and find the compound idea of extension arising from its repetition always to augment and become double, triple, quadruple, etc., till at last it swells up to a considerable bulk, greater or smaller in proportion as I repeat more or less the same idea. When I stop in the addition of parts, the idea of extension ceases to augment, and were I to carry on the addition to infinitum, I clearly perceive that the idea of extension must also become infinite. Upon the whole, I conclude that the idea of all infinite number of parts is individually the same idea with that of an infinite extension, that no finite extension is capable of containing an infinite number of parts, and consequently that no finite extension is infinitely divisible. ह्यूम यहाँ पे कह रहा है कि अगर तो हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, और हम कभी भी इनडिविजिबल पार्ट्स पर अराइव नहीं करते, इसका मतलब है कि हमारी डिवीजन कभी रुकेगी नहीं। सो अगर तो किसी चीज़ के इंडिविजिबल पार्ट्स हैं, इट इज़ नॉट इन्फिनिटली डिविजिबल। लेकिन अगर हम इंडिविजिबल पार्ट्स तक कभी अराइव ही नहीं करते, इट मीन्स वी ऑल्सो नेवर स्टॉप मेकिंग डिविजन्स। दस इफ समथिंग डज नॉट कंटेन इंडिविजिबल पार्ट्स देन इट इज़ इन्फिनिटली डिविजिबल। अब ह्यूम कहता है कि दिस ऑल्सो मस्ट होल्ड फॉर फाइनाइट एक्सटेंशंस। अगर तो एक फाइनाइट एक्सटेंशन इन्फिनिटली डिविजिबल है तो वो कंटेन करती है एक इन्फिनिट नंबर ऑफ एक्सटेंसिव पार्ट्स। अगर तो कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है यहाँ पे, तो एंटीसीडेंट भी फॉल्स होना चाहिए। सो इफ़ अ फाइनाइट एक्सटेंशन डज नॉट कंटेन एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स देन इट कैन नॉट बी इन्फिनिटली डिविजिबल। ह्यूम फिर कहता है कि आप कंसिडर करें 20 मैन को। अगर इन 20 मर्दों में से सिर्फ 19 एग्जिस्ट करते होते तो ये 20 मैन वुड नॉट एग्जिस्ट। ऑल 20 मैन exist only because each of the 20 men exists. Suppose we claimed that the quantity 20 exists and the quantity 19 exists, but both have an infinity of parts. ये absurd एक idea होगा, क्योंकि what would make 21 more unit greater than 19? So if something has a quantity of 20, it must be made up of 20 indivisible units. तो हम ये suppose नहीं कर सकते कि हम किसी ऐसे नंबर को
एग्जिस्ट सपोज नहीं कर सकते while also denying the existence of indivisible units. If there is quantity, there must be indivisible units. बट supposedly extension एक नंबर है और ये infinitely divisible भी है. बट अगर तो ये infinitely divisible है then it is not made up of units. But numbers must be made up of units. Hence, infinitely divisible extension cannot exist. इसके बाद ह्यूम divisibility of time की बात करते हुए कहता है All this reasoning takes place with regard to time, along with an additional argument which it may be proper to take notice of. It is a property inseparable from time, and which in a manner constitutes its essence, that each of its parts succeeds another, and that none of them, however contiguous, can ever be coexistent. For the same reason that the year 1737 cannot concur with the present year 1738, every moment must be distinct from and posterior or antecedent to another. It is certain then that time as it exists must be composed of indivisible moments. For if in time we could never arrive at an end of division, and if each moment as it succeeds another were not perfectly single and indivisible, there would be an infinite number of coexistent moments or parts of time, which I believe will be allowed to be a contradiction. The infinite divisibility of space implies that of time, as is evident from the nature of motion. If the latter, therefore, be impossible, the former must be equally so. यहाँ पे ह्यूम कह रहा है कि साल 1737 फॉर एग्जांपल कैन नॉट अकर विद द प्रेजेंट ईयर 1738 जब वो ये किताब लिख रहा था. दिस इज़ बिकॉज नो मैटर हाउ कंटिन्यूअस मोमेंट्स ऑफ टाइम आर, वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते. अगर हम कंसिडर करते हैं कि हम अगर टाइम को इन्फिनिटली डिवाइड करें then we would not have moments that are unitary. They would not be perfectly single. Hence, they would not be different from the ones around them. Thus, there would be an infinity of coexistent moments. But this is absurd. तो वो यूं दिखाता है कि time also must be made up of indivisible units.